channel 40 lectures by Revival Campus, and in today's lecture we are going to study about question number 3 of Exercise 4.4. And in this question we are having a variable and its value is 2 minus under 3, and we have to find its inverse. If you are having x is 2 minus under 3, then its inverse is equals to 1 over 2 minus under 3. इसका आसान अल्फाज में ऐसे याद करने का, अगर x की वैल्यू ओवर के नीचे, x ने ओवर के नीचे जाना है तो उसकी वैल्यू ने भी ओवर के नीचे जाना है। और फिर जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है ये इरेशनल नंबर होगा एंड यू हैव टू रैशनलाइज इट। अगर आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इट्स मेथड इज टू राइट 1 over 2 minus under 3 multiply by its conjugate and also divided by it। आपने इसके conjugate से multiply भी करना है और divide भी करना है। Okay, and now get the product of its numerator. 1 into 2 plus under 3 is also 1 plus under 2 plus under 3 over 2 minus under 3 into 2 plus under 3 is equal to 2 square minus under 3 square. Then our required answer 2 plus under 3 over 2 square is equal to 4 minus under 3 square is equal to 3. Then our answer will be 1 over x is equal to 2 plus under 3 over 4 minus 3 is equal to 1. Then we are having 2 plus under 3. 1 over x is equal to 2 plus under 3. And same like its second part, x is equal to 4 minus under 17. Then 1 over x is equal to 1 over 4 minus under 17. We have to get its conjugate। 4 minus under 17 का conjugate होगा 4 plus under 17, and इसी से multiply and divide कर देंगे। 4 plus under 17 over 4 plus under 17, and now we have to get take its product of numerator। 4 plus under 17 into 1 is equal to 4 plus under 17 over 4 minus under 17 into 4 plus under 17 is equal to 4 square minus under 17 square. And now 4 plus under 17 over 4 square is equal to 16 minus under 17 का स्क्वायर एंड स्क्वायर काट देंगे तो हमारे पास मीन के 4 स्क्वायर माइनस under 17 स्क्वायर में 4 स्क्वायर is equal to 16 and under 17 square is equal to 70, and we are having 4 plus under 17 over minus 1। अगर आप इसको इधर ही हल कर दें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको अलग इस तरह लिखना चाहते हैं -4 minus under 17, then this will also its answer। -4 minus under 17 is equal to 1 over x, and you can also write finish it here। Okay, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास जी, in third part we are having x is equal to under 3 plus under 2, and we have to find x plus 1 over x। This is its third part। अब थर्ड पार्ट में हमें जब x is equal to under 17 plus 1 over under x is equal to under 3 plus under 2 दे दिया गया है। x plus 1 over x जब हमने फाइंड करना है तो इसके लिए हमें पहले इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। x की वैल्यू हमारे पास है 1 over x फाइंड करना पड़ेगा, और 1 over x इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और जब वो आ जाएगा फिर हम दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो x की वैल्यू पुट करके फिर 1 over x को उसके नीचे पुट करके वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो सॉल्व भी उनसे नहीं हो पाता। तो हम इसको पहले x की वैल्यू है, हम पहले 1 over x फाइंड करेंगे। तो ये चूंकि थोड़ा लेंथी है, मैं ये क्वेश्चन रेज कर देता हूँ जी। तो इसके थर्ड पार्ट में हम पहले x का इन्वर्स फाइंड करेंगे। 1 over x is equal to under 3 1 over under 3 plus under 2। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। द कॉन्जुगेट ऑफ under 3 plus 1 under 2 is under 3 minus under 2, and 1 over under 3
plus under root 2 multiply under root 3 minus under root 2 over under root 3 minus under root 2. Then we are having product 1 into under root 3 minus under root 2 is equal to 1 into under root 3 is equal to under root 3 minus under root 2 over under root 3 plus under root 2 into under root 3 minus under root 2. इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा under root 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएंगे। हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 3 minus 2. It means we are having 1 over x is equal to 3 minus 2 is equal to 1. Then we are having under root 3 minus under root 2. 1 over x is equal to under root 3 minus under root 2 over 1 over 1 हम लिखते नहीं। And now we are having both values. हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और 1 over x की वैल्यू भी आ गई। अब हमने x और 1 over x की वैल्यू को प्लस करना है। x plus 1 over x is equal to the value of x is under root 3 plus under root 2 plus 1 over x is equal to under root 3 minus under root 2. And now we are having 4 terms in it, and like terms are under root 3 and under root 3 or under root 2 or under root 2 plus under root 2 minus under root 2। अगर दो like terms एक का साइन प्लस और एक का माइनस हो तो हम उन दोनों को कट कर देते हैं, या अगर उनको आप माइनस भी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जो शो नहीं होता। under root 3 plus under root 2 तो 3 under root 3 plus under root 3 is equal to 2 under root 3 is the value of 1 over x plus 1 over x. So this is our required answer, and dear students, here we have to understand about the concept of how can you find the inverse of a surd, and उसके inverse को खत्म करने के लिए फिर आपने मेन के conjugate जो है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और फिर ये सारा प्रोसेस करके हमने 1 over x और 1 over x की वैल्यू फाइंड करके फिर उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। हमारे पास x plus 1 over x आएगा। अगर आपके पास आता है x minus 1 over x तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 over x की वैल्यू आएगी, फिर उस ब्रैकेट्स को ओपन किया जाएगा, फिर आपने उनको सॉल्व करके तो इस तरह इसको भी सॉल्व करना है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।